Good evening, all. I, Dipali Boyer, Faculty of Mechanical Engineering Department, welcome you in the Mechanics of Material Practical. So, our today's experiment is experiment number 7, that is the torsion test on the metal, which comes under the course outcomes 3. And the course outcomes 3 is the analysis of a torsion test on the metal. Okay. So, let us see the experiment number 7. The aim of the experiment is to perform the torsion test on the metal. So here we consider any metallic material as a specimen. Then what are the objectives of this experiment? The objectives is to conduct the torsion test on mild steel, generally to find out the modulus of rigidity. So this torsion testing machine is specifically used for to find out the modulus of rigidity of a metal specimen. Then next objective is to conduct the torsion test on the cast iron specimen to find out the modulus of rigidity. Then what are the different apertures here we have to use? The first aperture is the setup of a torsion testing machine. Then the twist meter, which is used for measuring the angle of twist of a specimen, and here we use the steel rule, or we can say the vernier caliper or micrometer is used to measure the length of the particular specimen. Okay. Next we see the background of this torsion testing machine. This is the setup of a torsion testing machine. This is the base of the torsion testing machine, and here there is a arrangement, fixing arrangement. These are the two jaws on which we are fixing the specimen of any metal. Then this is the hand wheel. Generally we use the electric motor for the forward and backward path for the impacting of the force on the particular specimen. Then there is a one of the digital meter which shows the twisting angle, which shows the twisting moment of a particular torque directly. So here, which is the setup, there is a two jaws. There is a two jaws on which we fix the specimen. This is the base of the particular machine. This is the hand wheel, or we can say there is a electric motor setup which is operated either by forward direction or by reverse direction according to our requirement. Then this is the indicator which is attached on front side, on the side of this machine, which is directly show the what is the twisting of the particular torque of the specimen. Okay. Then generally the torque test is used to measure the value of a modulus of rigidity for any specimen of a metal. Then the modulus of rigidity is calculated by using the standard formula, that is T by IP is equal to C theta by L is equal to Q by R. Okay, so here we use the standard formula to calculate the modulus of rigidity, which is denoted by capital C. So where here is the T, which is nothing but the torque applied in Newton meter or Newton mm. Then IP, that is polar moment of inertia in mm raised to power 4. C, that is modulus of rigidity. Then theta, that is the angle of twist, which is directly calculated with the help of this digital meter, which is attached on the side of the machine. Then L, which is the length of the specimen or whatever kind of a shaft we are using for the torsion testing operation. Then Q is the shear stress, and R is the distance of the element from the center of a shaft. So generally we use this formula, that is T by IP is equal to C theta by L. So we rearrange this formula by using C is equal to T into L divided by IP into theta. With the help of that formula, we get the modulus of rigidity using the torsion testing machine. Okay. So what is the procedure? First, we have to check the setup of a torsion testing machine, check the micrometer, check the meter which is indicate the angle of twisting, which is at 0 degree or not. Then fix the specimen in between the two jaws, which is specimen is either circular or rectangular according to our availability. We use the specimen, metal specimen, which is fixed between the two jaws.
Then we start the electric motor either in reverse direction or in forward direction, applied a particular torque which is started from 30 kg up to 40 kg up according to our choice. Then we apply the torque accordingly. We start the process with a 3 revolution. We measure the torque with respect to their angle of twisting. So in this way, we check 5 to 10 series for finding out this angle of rigidity. Okay. So when we get the particular 5 to 10 values for the torque and angle of twisting, accordingly we draw a graph for the T theta, which is called as a T theta gap, that T theta graph, which is a torque or twisting graph. So with the help of a standard formula, we find out the modulus of rigidity. This is the standard formula. C is equal to TL upon theta into IP. Torque which is applied at the basic level. Then we use a length, which is the length of the specimen, theta angle of twisting for a particular torque applied, and IP is the polar moment of inertia, which is find out by using formula pi by 32 d raised to power 4 according to the cross section area of the particular specimen. Okay. So now we have to perform the observation. So accordingly, we can take 5 to 10 readings. So when we applied a torque of a 20 kg up, accordingly what angle of twist is comes. So we have to put here. Then with the help of standard formula, we have to find out the modulus of rigidity. Then we can apply the 40 kg up angle, 40 kg up of torque. Accordingly, we get the angle of twisting in radian. That is in degree. We have to convert it into radian by multiplying by pi by 180. फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं. देन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. सो इन दिस वे वी कैन टेक 5 to 8 रीडिंग्स फॉर कैलकुलेटिंग द फॉर ड्रॉइंग द टी थीटा ग्राफ. तो टी थीटा ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर्ड ए पर्टिकुलर अगर रेंज हमारे पास रहेंगी तो दैट ग्राफ विल बी अच्छा दिखेगा. ठीक है. So there are some practical questions which comes in a Viva, that is what is a torsion. So torsion is nothing but which is a twisting of any metallic body. Okay, torsion is nothing but it is a twisting of any metallic body by exertion of torque. ठीक है, by exertion of we can say forces. अगर आप किसी बॉडी के ऊपर मेटेलिक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो accordingly that body get twisted, which is called as a torsion. ठीक है. Then the next question which comes is what are the different application of a torsion. So there are many application which comes under the torsion testing, that is which is used in doors, which is used in hinges, which is used in a cloth pins, which required a torsion in the particular material. So these are the some application of a torque. So here we some a practical video of a torsion testing machine which is available in our campus. So let us see the torsion testing machine. So this is a setup of a torsion testing machine. This is the base of a torsion testing machine. This is the motor which is applied for the power generation. Then this is the jaw. These are the two jaw, one and second. Okay, and this is a circular wheel which is which shows the angle of revolution and the torque at particular torque, which shows the torque that is in Newton mm or Newton meter according to our calculation. And for a particular torque the twisting angle is shown in this digital meter. Okay, so this is a electric motor which is used for the direct electric power supply for this operation. This is the specimen, metal specimen. So here we use a rectangular mild steel specimen for this operation, which is fixed in these two jaw. Okay, this is the base of a our system torsion testing machine. This is the hand wheel which is shown in the previous diagram. So this hand wheel is used to give the forward and backward motion for the operation.
This is the digital indicator which shows the angle of twisting with a respect to the torque applied. अगर आप 20 kg of torque applied करते हो तो accordingly we get directly a digital value of a angle of twist on this meter. So once we fix this shaft in between a shaft or any metallic specimen in between these two jaw, then we can ready to apply the torque. So first check that is this meter is at a zero initial condition or not. We have to also check if this circular revolution plate which is at a zero initial condition or not. So here we use the rectangular cross section as a specimen. Generally these are the nut bolts arrangement, these are the nut bolts arrangement which is used to fix a particular specimen tightly. अगर आप इसको सिर्फ फिक्स करके छोड़ देते हो तो ये ऐसे नहीं चलेगा. when we applied a electric supply तो उस कंडीशन से वो बाहर भी फेंक सकता है. तो we have to fix that specimen in a पर्टिकुलर जो आपको अरेंजमेंट दी हुई है नट एंड बोल्ट की, उससे आपको इसको टाइट करना पड़ेगा. ठीक है, ये है आपका एंगुलर रिवॉल्यूशन. ये आपको देता है कि कितना टॉर्क आपने अप्लाई किया है. अकॉर्डिंगली टॉर्क आप लोग वेट करोगे 3 रिवॉल्यूशन तक. 3 रिवॉल्यूशन तक आपका जितना भी टॉर्क यहाँ पे रहेगा, अकॉर्डिंगली आप इसकी जैसे 20 पे आपने चेक किया एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, फिर आप 40 पे चेक करोगे, फिर आप 60 को चेक करोगे. तो ऐसे हम लोग 7-8 वैल्यू लेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे मीटर पे उसका रेंज चेक करेंगे. ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग का. सो नाउ वी गो थ्रू दी ऑपरेशन. यहाँ पे ये अटैच किया है. जब भी आप ऑपरेशन स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट यू मस्ट हैव टू चेक कि ये प्रॉपरली टाइट किया है कि नहीं है. ठीक है, तो वंस वी गेट दैट कि ये प्रॉपरली फिक्स किया है और ये जीरो इनिशियल कंडीशन पे है, देन वी कैन स्टार्ट अवर नेक्स्ट ऑपरेशन टू स्टार्ट दिस इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन. फर्स्ट वी अप्लाई इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो वी अप्लाइड दी मूवमेंट इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखते जाएंगे ऑन द स्पेसिमन. सो ऑन द स्पेसिमन वी गेट चेंजेस दैट कि ये स्पेसिमन आपका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज होते जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका जो टॉर्क है उसके अकॉर्डिंगली आपको एंगल ऑफ ट्विस्टिंग मिलते जाएगा. ठीक है, तो एक बार आप फॉरवर्ड करके इसको ट्राई करो, देन आप बैकवर्ड रिवॉल्यूशन से भी इसको ट्राई कर सकते हो. जैसे जैसे आपने टॉर्क अप्लाई किया वैसे वैसे इसमें ट्विस्टिंग, अगर आप इस स्पेसिमन को चेक करोगे तो यहाँ पे हल्का हल्का ट्विस्टिंग आना स्टार्ट हो गया है. ठीक है, तो जैसे आप टॉर्क अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक सप्लाई से फॉरवर्ड पाथ अगर आप देते हो तो ये देखो ये 3 बार रिवॉल्यूशन होने तक आप इसकी रेंज ले सकते हो. तो जैसे अगर हमने एंगल ऑफ ट्विस्टिंग 180 पे कितना आया है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिवॉल्यूशन हम लोग इसको चेक करते हैं. दीज आर दी चेंजेस इन द स्पेसिमन. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है, इसका लेंथ भी चेंज होगा, इसका ओवरऑल पूरा डायमेंशन आपका स्पेसिमन का चेंज होगा. ठीक है, तो कंटिन्यू हम लोग ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक आपका मटेरियल ब्रेक नहीं होता. ठीक है, हम लोग अपना टॉर्क बढ़ाते रहेंगे. ठीक है, ये देखो ये पूरा ट्विस्ट होते जा रहा है. अकॉर्डिंगली हम लोग रीडिंग को चेक करते जाएंगे. जब तक ये पूरा ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग इसको अप्लाई करते बैठेंगे. एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर आपका जो स्पेसिमन है वो स्पेसिमम ब्रेक होगा. ठीक है, तो ब्रेक मतलब जरूरी नहीं है कि वो मिडल से ही ब्रेक होगा, वो एक सेंटर से भी ब्रेक हो सकता है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका स्पेसिमन जो है वो यहाँ पे कट कर रहा है. ठीक है,
So we can say कि this is the extreme limit, एक्सट्रीम लिमिट हो गई है इसकी। ऑन दैट केस अभी ये ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया है। तो जैसे आपको ऐसी कंडीशन दिखती है, आपको प्रोसेस को स्टॉप करना है, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले रफली हम लोग इसके कैलकुलेशंस लेते हैं, रीडिंग पर्टिकुलर टॉर्क के लिए कितना ट्विस्टिंग आया है, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग। तो ये हमारा मटेरियल है जो दो पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है। इसके हम लोगों ने इनिशियली लेंथ फाइंड की थी। तो इसका इनिशियल लेंथ हमारा था 120 mm। सभी कैलकुलेशन हमारे mm में है। सो हियर लेंथ टॉर्क हम लोग ले रहे हैं 48 kg मीटर। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन न्यूटन mm बिकॉज टॉर्क इज कंसिडरिंग कैलकुलेशन इन न्यूटन mm हियर। सो 48 kg मीटर का हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 48 इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm में, ठीक है। देन एंगल जो था वो डिग्री में था। जो डिजिटल इंडिकेटर है उसमें 1.5, उसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने रेडियन में बाय मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, सो विच कम्स एज ए 0.031। ओके। देन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है T बाय थीटा इज इक्वल टू L अपॉन IP। तो IP इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, वो मटेरियल क्रॉस सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन माइट स्टिल। तो क्रॉस सेक्शन के लिए हमारा जो फॉर्मूला है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो अकॉर्डिंग टू दी, अगर आप डेटा बुक में जाते हो तो यू विल गेट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला BD³/12। तो विड्थ एंड डायमीटर, विड्थ एंड डेप्थ हम लोग इसका लेंगे। सो यू विल गेट ए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 4218 इन mm⁴। इसका यूनिट mm⁴ होता है। देन पुट ऑल दिस वैल्यू। थीटा एंगल, उसका हमारा वैल्यू आया है 0.031। देन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आया है, that all standard value we can put in the given formula, that is modulus of rigidity C is equal to 48 into 10⁻³, 4.8 into 10⁻³, that is polar moment of inertia divided by 0.031 theta is equal to length 120 divided by IP 4218. So by calculating this, you will get a polar moment, you will get a modulus of rigidity value that we have to find out by using this operation is 444405. Okay, so in this way we have to